Hello, civil service aspirants. I welcome you all to this YouTube live class organized on behalf of StudyIQ. In today's class, I will be discussing a topic that is, what is the fundamental difference between quantitative research and qualitative research? How they are opposite to each other and how they are also complementary to each other. That I will discuss in detail in today's class. Before making a discussion about this quantitative and qualitative research, I want to tell you the fact that it's a topic of sociology for UPSC civil service examination. Time and again, the UPSC has asked question in written examination, particularly in sociology paper 1 from this topic. Over the last 10 years, you would find that every year a question has been asked from this topic indirectly. So, in today's class, I would make a crystal clear difference between these two research. In addition to that, I would also discuss how questions have been asked from this topic time and again in sociology paper 1, particularly in UPSC civil service written examination. So, quantitative versus qualitative research. How they are contradictory to each other, they are opposite to each other, and how there is also a complementarity, a connectivity between the two research. I want to tell you the fact that all of you know that it is Auguste Comte who coined the concept sociology in the year 1839. So, Auguste Comte is formally regarded as the father of sociology. Auguste Comte not only coined the concept sociology, Auguste Comte not only coined the concept sociology, he also coined the concept positivism. Positivism concept was coined by Auguste Comte. So also sociology concept was coined by Auguste Comte. Actually, this concept positivism coined by Auguste Comte, it gave birth to quantitative research in sociology. What is positivism and what is the meaning of positivism? Make a derivation. Positive plus ism. Positive plus ism is called positivism. Positive means science, ism means philosophy. Positive means science, ism means philosophy or approach. So, the approach of science or the philosophy of science is called positivism. What that positivism is and how positivism gave birth to quantitative research in sociology. Positivism means the approach of science. Positivism promotes the idea that social life can be explained in terms of cause and effect relationship. Repeating it again, positivism promotes the idea that social life can be explained in terms of cause and effect relationship. So, the concept positivism was coined by Auguste Comte, and you know, Professor Emile Durkheim is the first professor of sociology all over the world. So, Professor Emile Durkheim applied positivism in context of conducting research in sociology. So, how did Professor Durkheim applied positivism for conducting research in sociology? Professor Durkheim is of the opinion that social life can be explained in terms of cause and effect relationship. Just like in physical world, things are explained in terms of cause and effect relationship. Exactly in the same way,
Professor Emile Durkheim is applying the approach of science for explaining social life. How I am citing an example just to connect sociology with physics by applying the method of Professor Emile Durkheim. You know, in physics, you have been told that anything which is thrown above will finally come back to the surface of the earth because of the gravitational pull. So, gravitational pull is the cause, falling of an object on surface of the earth is the effect. This is the approach of physics, that is scientific approach. So, science tries to explain everything in terms of cause and effect relationship. Science tries to explain everything in terms of cause and effect relationship. For example, gravitational pull is the cause and falling of an object on surface of earth is the effect. This approach of cause and effect has been applied by Professor Durkheim for explaining social life. For example, I want to tell you, if we ask Professor Emile Durkheim why people commit suicide, if we ask a question to Professor Emile Durkheim, why people commit suicide, he would say, people, those who are experiencing detachment or disintegration with society, people experiencing detachment or disintegration with group or with society will feel tempted to commit suicide. It means disintegration of the person with the group is the cause and suicide is the effect. So, suicide is effect and disintegration is the cause, and suicide is the effect. Suicide is the effect. Just like you see in physics, gravitational pull is the cause and falling of an object on the surface just like you see in physics, gravitational pull is the cause and falling of an object on surface of the earth is the effect. This is cause, this is effect. In social life, disintegration is the cause and committing suicide is the effect. Durkheim बुझौचंती जे जो लोकर ग्रुप सहित अटैचमेंट कमी जाए से लोक सुइसाइड करे। तेणु ग्रुप सहित अटैचमेंट कमीबा, ग्रुप कहले फैमिली, ग्रुप कहले डिस्ट्रिक्ट, ग्रुप कहले विलेज, ग्रुप कहले स्टेट, ग्रुप कहले कंट्री। दरखेम की जदि पचारिबो काहींकि ग्रुप कहले भी रिलीजियस ग्रुप, दरखेम की जदि पचारिबो काहींकि गोटाए लोक सुइसाइड करे, दरखेम कहिबे जो लोकर तार फैमिली संगे अटैचमेंट कमी जीवो, तार विलेज संगे अटैचमेंट कमी जीवो, तार टाउन सिटी संगे अटैचमेंट कमी जीवो, तार स्टेट संगे अटैचमेंट कमी जीवो, बा तार कंट्री संगे अटैचमेंट कमी जीवो, बा तार रिलीजियस ग्रुप हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म संगे अटैचमेंट कमी जीवो, सेही लोकटा सुइसाइड करिवो। सो डिटैचमेंट और डिसइंटीग्रेशन विथ द ग्रुप इज द कॉज एंड सुइसाइड इज द इफेक्ट। अर्थात दरखेम बुझौचंती सोशल लाइफ की फिजिसिस्ट माने जेमिति फिजिकल वर्ल्ड को बुझाती जे ग्राविटेशनल एनी ऑब्जेक्ट को आमे जदि ऊपर को पकई दउचंती से तळु को खसी आसुची, कारण ग्राविटेशनल पुल ताको टाणी आनुची। सो ग्राविटेशनल पुल इज द कॉज एंड फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ इज द इफेक्ट। ठीक सेमितिया साइंटिफिक लॉ माध्यम रे दरखेम सोशल लाइफ की बुझौचंती। एठी उत्पत्ति हला तमर क्वांटिटेटिव रिसर्च रो अप्रोच। तेनो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहिले आमे बुझंती
क्वांटिटेटिव रिसर्च सोशल लाइफ की कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रे बुझाए। क्वालिटेटिव रिसर्च सोशल लाइफ की कॉज आउ इफेक्ट रे बुझाए नाही। सो द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन quantitative research and qualitative research is that quantitative research tries to explain the social life or explain the social world in terms of cause and effect relationship. On the other hand, qualitative research tries to explain the social life not in terms of cause and effect relationship but in terms of some other things that I would explain gradually. तेनु सोशियोलॉजी रे क्वांटिटेटिव रिसर्च कहिले जो साइंटिफिक रिसर्च करा होची दरखेम कर ट्रेडिशन को फॉलो करिकी सेटा होची क्वांटिटेटिव रिसर्च। एवं दरखेम बाद अलगा सोशियोलॉजिस्ट माने लाइक कार्ल मार्क्स सी भी गोटे अप्रोच बतई चंती रिसर्च करिया पई। मार्क्स वेबर सी गोटे अप्रोच बतई चंती रिसर्च करिया पई। तेनो दरखेम की बाद देले अलगा जो सोशियोलॉजिस्ट माने रहिले से माने केमिति सोशल लाइफ रे रिसर्च करा जाई पारिबो ता उपरे जहा जहा कहि चंती सेई गुडा होची क्वालिटेटिव रिसर्च। पिला माने देखो मु तुमको दरखेम कार्ल मार्क्स मार्क्स वेबर यही तीन जन को कथा बुझे देवी गोटे कॉमन एग्जांपल को देख। पिला माने देख मुझे देखी दौची तुम किसी या भितर मेसेज देइछ कि मते जहाँ तुम डाउट अच्छी मते पचारि परिबो एठी। खुशी खुशी भाग्यलक्ष्मी श्रद्धा ओके गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ओके किसी मेसेज नाही तुम डाउट नाही। तुम जदि किसी डाउट आसीबो इठी मु पढ़ेला बेले तमे ए जो एथरे मेसेज देब तुम मेसेज देखिकी मु तुमको बुझे देबी तुम डाउट क्लियर कर देबी। पिला माने देख एटा गोटे ग्लास ए ग्लास रे पानी अछि। आमे तीन जन सोशियोलॉजिस्ट का कथा मु कहिछि दरखेम मार्क्स वेबर कार्ल मार्क्स ये तीन जन को आमे पचारिबा ग्लास टा कौन पाई यूज हुए ग्लास रो यूटिलिटी कौन ये प्रश्नटी आमे तीन जन को पचारले। एठी आसीबो तमरा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च भितर डिफरेंस। दरखेम की पचारले व्हाट इज ए ग्लास दरखेम कहिबे ग्लास इज ए कंटेनर which is used for drinking water। दरखेम के कहिबो जदी ग्लास कौन पाई यूज हुए दरखेम कहिबे ग्लास होची गोटे पात्र जो थरे पानी रखा हुए एवं आमे पानी पिया पई सेटा को यूज करंती दिस इज ग्लास। ए प्रश्नटी दरखेम जहा को पचारिबो इंडिया रो लोक को पचार पाकिस्तान रो लोक को पचार अमेरिका रो लोक को पचार हिंदू को पचार मुस्लिम की पचार ख्रिस्टियन को पचार बुद्धिस्ट की पचार जैन को पचार पृथ्वी सारा जे कोनसी लोक को पचार व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ ग्लास ऑल ऑफ देम वुड से ग्लास इज ए कंटेनर यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ग्लास होची गोटे पात्र जोटा को यूज करा हुए पृथ्वी सारा लोक यूज करती पानी पीवा पाई। दिस आंसर इज वन एंड सेम। This answer does not vary from person to person, does not vary from religion to religion, does not vary from country to country। पृथ्वी सारा लोक को जहाँ पचारिबो ग्लास को नहीं कि गोटे प्रश्न पचारले उत्तर गोटे हेबो ग्लास इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च टा सबु बळे कोन करे इनभेरिएबल टर्म रे परस्पर भितर विभेद न रखिकी गोटे कथा कहे तेणु रिसर्चटा केवल गोटे वे रे करी हबो ए कथा जी कहे दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। पृथ्वीर जे कोनसी लोक को पचारले ग्लास कौन पाई यूज हुए प्रत्येक लोक कहबो ग्लास इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर।
तांको देश अलगा हो पारे, तांको धर्म अलगा हो पारे, तांको जाति अलगा हो पारे, तांको ना अलगा हो पारे, तांको जेंडर अलगा हो पारे, किंतु प्रश्नर सेम प्रश्नर उत्तर सेम हबो. दिस इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच. क्वांटिटेटिव अप्रोच सब बळे, क्वांटिटेटिव रिसर्च सब बळे ऑब्जेक्टिविटी ऊपर प्रायोरिटी दिए, ऑब्जेक्टिव रो पाथ कथा कहे. बर्तमान सेम प्रश्न पचारि तो मार्क्स वेबर को, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अ ग्लास. मार्क्स वेबर तुमको सीधा उत्तर देबेनी, दरखेम सीधा उत्तर दे देले, कहले ग्लास इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. मार्क्स वेबर को जदि पचारिबो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अ ग्लास, मार्क्स वेबर वुड गिव यू ए डिप्लोमेटिक आंसर, जस्ट लाइक द पॉलिटिशियंस गिव. मार्क्स वेबर तुमको डिप्लोमेटिक आंसर देबे, से कहिबे द यूटिलिटी ऑफ ग्लास differ from situation to situation and differ from person to person and from area to area. देख एठी आसी सब्जेक्टिव अप्रोच. यूटिलिटी ऑफ ग्लास डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सपोज मु आफ्रिकार ह्यूरी फॉरेस्ट रे रहुची, मु गोटे ट्राइबल लोक आफ्रिकार ह्यूरी फॉरेस्ट रे रहुची हला, मु ग्लास यूज जानी नाही, मु ए ग्लास टाकू धरिकी एठी मु थिली, एठी मु ठिया हैथिली बा बसथिली, ए टेबुल ऊपर ग्लास टा थिला. बर्तमान गोटाए लोक आसिला, मते अटैक कला, मोर शत्रु. मो हाथ रे किछि नाही, मु देखली पाखरे ग्लास टा अछि. आई यूज दिस ग्लास फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ फ्रॉम अटैक ऑफ माई एनिमी. शत्रुटा आसला मते पिटिया पाई, मु बर्तमान ग्लास टाकू बाड़ी की भांगी देली, सेटा मुनिया हो गला, सेटाकू ता पेटरे भूसिया पे चेष्टा कली, से तळे मते मारिया पे चेष्टा करथला. बुझे होची. सो आज I am living in African Huri forest, I am a tribal person and I was not having any weapon in my hand and my enemy came and attacked me. I utilized this glass for the purpose of protecting myself from the attack of my enemy. So for me, glass is a device of self protection. ग्लास होची गोटे हथियार मो पाई, जी मते आत्मरक्षा रे साहाय्य कला. बुझे होची. तमे दुकान को गल, मु गोटे दुकानी, मो दुकान रे ई ग्लास बिक्री करे, मु मते जदि पचारिबो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ ग्लास, मु कहिबी ग्लास इज एन आइटम इन माय शॉप. बाय सेलिंग दिस आइटम I am getting some profit, so this glass is helping me to earn my livelihood. मु गोटे दुकान करिछि, सेठी ग्लास कप बिक्री करे. तमे आसिकी पचारलो ए ग्लास रो मूल्य तम जीवन रे कोन, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ ग्लास इन योर लाइफ. मु कहली ग्लास इज an item in my shop. By selling this item I am getting some profit because of which I am earning my livelihood. तापरे थर्ड लोक तार पानी पीउथिला ग्लास रे मो भलिया, ताकू पचारलो व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ ग्लास. से दरखेम जेमती कहतले से कहला ग्लास इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. देख तीन जन लोक को ग्लास ऊपर पचारलो व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ ग्लास, ग्लास रो उपयोगिता कौन. तीन जन गोटे कथा कहलेनी, तीन जन अलगा अलगा कथा कहले. सब गोटे सेम प्रश्न पचारिकी अलगा अलगा उत्तर पाइबाटा को कहा जाए सब्जेक्टिव अप्रोच. तेणु मार्क्स वेबर सोशियोलॉजी रे रिसर्च करने को जो अप्रोच डेभलप करुचंती सेटा होची सब्जेक्टिव अप्रोच, सेटा होची क्वालिटेटिव रिसर्च. तेणु क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी रो कथा कहूला बेलू क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिविटी रो कथा कहूची. सी कहूची रिसर्च गोटे पाथ रे हब नाही, रिसर्च गोटे वे रे हब नाही, रिसर्च विभिन्न वे रे करा जाई पारिबो. बुझियला पिला माने क्लियरली बुझिलो. तापरे
कार्ल मार्क्स तांकर अप्रोचटा कम्युनिज्म कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। कार्ल मार्क्स को जदि पचारिबो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ ए ग्लास, कार्ल मार्क्स कहिबे, कार्ल मार्क्स को तो जानचो बुर्जुआ प्रोलेटारिएट, खटिखिया लुटिखिया धनी गरीब ए लाइन से कहिबे। कार्ल मार्क्स कहिबे ग्लास इज an item which is manufactured in glass manufacturing industry owned by a bourgeois, owned by a bourgeois। जने शिल्पपति गोटे ग्लास तैयारी शिल्प तैयारी करछि, सेठी ग्लास तैयारी हुए, तेणु शिल्पपति कौन करछि बहुत वर्कर को एम्प्लॉयमेंट देइछि, से माने ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काम करती, से मानक दरमा मिले, तांको दर काम करे कि, तेणु ग्लास द्वारा ग्लास तैयारी फैक्ट्री रे इंडस्ट्रियल वर्कर माने इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा शोषणर शिकार हुअंती। सो ग्लास इज एन आइटम मैन्युफैक्चर्ड इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओन बाय एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड industrialist is giving employment to the workers are manufacturing glass, that's the reason they are getting monthly salary or daily wage, and in this way industrialist is becoming prosperous by employing the workers in his factory। तेणु यही हिसाब रे कार्ल मार्क्स भी गोटे रास्ता कहले, किंतु कार्ल मार्क्स का अप्रोच टा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दीटार मिसी मिसिके अप्रोच। केमिति ऑब्जेक्टिव अर्थ गोटे वे रे कहिबा, सब्जेक्टिव अर्थ से गोटे प्रश्न को विभिन्न वे रे कहिबा। तेनो देख इंडस्ट्री रे इंडस्ट्रियलिस्ट अछंती, इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी अछंती, तेनो दी जनक इंटरेस्ट रु से जनकर इंटरेस्ट कंसीडर करछंती केमिति इंडस्ट्रियल वर्कर एक्सप्लॉइटेड होची ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रे हला, किंतु इंडस्ट्रियलिस्ट रो कथा चिंता करनाती कार्ल मार्क्स। से हिसाब रे कार्ल मार्क्स का अप्रोच होची ऑब्जेक्टिव आउ सब्जेक्टिव तार मझी मझी के अप्रोच। कार्ल मार्क्स का अप्रोच होची देख दरखेम का अप्रोच, दरखेम का अप्रोच है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। कार्ल मार्क्स का अप्रोच सॉरी मैक्स वेबर का अप्रोच है सब्जेक्टिव, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का अप्रोच है सब्जेक्टिव। कार्ल मार्क्स का अप्रोच हम मझी मझी क्या, कार्ल मार्क्स का अप्रोच हम subjectively objective, subjectively objective। subjectively objective एटा हबो कार्ल मार्क्स का अप्रोच, मिडिल पाथ। कार्ल मार्क्स का अप्रोच होची मिडिल पाथ अप्रोच, मिडिल पाथ अप्रोच। केमी देखो दरखेम की पचारलो ग्लास कौन पाई यूज हुए, से कहले ग्लास पानी पिया पे यूज हुए। मैक्स वेबर को पचारलो ग्लास कौन पाई यूज हुए, कहले विभिन्न कारण लगी यूज हुए, विभिन्न कारण लगी यूज हुए। यूटिलिटी ऑफ ग्लास डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम लोकालिटी टू लोकालिटी। दुकानी की पचारलो सी गोटे कथा कहला बेलू, जे पानी पीउची ताकू पचारलो से गोटे कथा कहला, जी तार ग्लास को यूज करके शत्रु पाखर निजको प्रोटेक्ट करके रखला सी आ गोटे कथा कहला, सेटा सब्जेक्टिव हला। प्रश्न गोटे उत्तर अनेक, दैट इज सब्जेक्टिव। प्रश्न गोटे उत्तर समस्तक लगी गोटे, दैट इज ऑब्जेक्टिव हला। किंतु कार्ल मार्क्स का अप्रोच होची मिडिल पाथ। कौन मिडिल पाथ, गोटे आंसर से को दउचंती, दैट इज ऑब्जेक्टिव ना नहीं। से कहउचनी ग्लास इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी owned by the industrialist who has given employment to the workers, and workers are manufacturing glass and they are exploited by the industrialist। उत्तर गोटे माने ऑब्जेक्टिव। पुनी सब्जेक्टिव केमिति हला, सब्जेक्टिव अर्थ
सी कहते जे इंडस्ट्रियल वर्कर रो कथा कहते से माने केमिति एक्सप्लॉइटेड होउचंती एवं इंडस्ट्रियलिस्ट केमिति एक्सप्लॉइट करूची तेनु वर्कर लगी गोटे हला को ग्लास मते इनकम दिए इंडस्ट्रियलिस्ट लगी ग्लास मते प्रॉफिट दिए तेनु एठी आसला सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिवली तापर से कबे कम्युनिज्म फाइनली आसीबो जोठी एक्सप्लॉइटेशन हटिबो तेनु तांकर अप्रोच हला ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिव अप्रोच आ भितरु क्वांटिटेटिव रिसर्च कहले केवल दरखेम कहले क्वांटिटेटिव रिसर्च हले दरखेम मार्क्स वेबर आउ कार्ल मार्क्स आंको अप्रोच टाको आमे रखिबा क्वालिटेटिव अप्रोच याकू रखिबा आमे क्वालिटेटिव अप्रोच रे हला तेनो आमर सोशियोलॉजी रे तीन जण फाउंडिंग फादर अछंती फर्स्ट हेले दरखेम सोसाइटी रिलेटेड कौन रिसर्च करा जाई पारिबो तार गोटे मेथड से कहिसती दरखेम कर रिसर्च ना हला देयर आर थ्री फाउंडिंग फादर्स एमाइल दरखेम देयर आर थ्री फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी नेमली फर्स्ट हेले एमाइल मु शॉर्टकट रे लिखुची एमाइल दरखेम सेकंड होची मार्क्स वेबर थर्ड होचंती कार्ल मार्क्स देयर आर थ्री फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी दरखेम कर अप्रोच हला पॉजिटिविज्म कहीं साइंटिफिक अप्रोच तेनो दरखेम जहाँ रिसर्च को लेकिन मेथड डेवलप करचंती तार ना होची PSSRM पॉजिटिविस्ट सोशल साइंस रिसर्च मेथोडोलॉजी PSSRM पॉजिटिविस्ट सोशल साइंस रिसर्च मेथोडोलॉजी मार्क्स वेबर रिसर्च को लेकिन जहाँ मेथड डेवलप करचंती सेटा होची ISSRM I means interpretative social science research methodology interpretative repeating again interpretative social science research methodology interpretative social science research methodology तापरे कार्ल मार्क्स आसीबे कार्ल मार्क्स तो प्रेजेंट कैपिटलिस्ट सोसाइटी की क्रिटिसाइज करचंती तांकर अप्रोच ता बिटवीन दरखेम एंड मार्क्स वेबर तांकर मेथड हला रिसर्च को नै कि CSSRM तेनो क्रिटिकल सी हला क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च मेथोडोलॉजी ए दीटा को मिसई दबा दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च फर्स्ट दरखेम जो मेथड कहले दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च बुझेला तेनो तीन जन फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी have suggested three different ways of conducting research related to society. The first method suggested by Emile Durkheim is called positivist social science research method, that is called quantitative research. Second method has been suggested by Max Weber with respect to conducting research in society. His research method is called interpretative social science research method or methodology. Third research method has been suggested by Karl Marx and his research method is called critical social science research method. Okay, and these three are called major research methods in sociology. So first method suggested by Durkheim is called quantitative research. The remaining two methods are called qualitative research. आज का दिन रे पुणी कौन आसीची
ना फेमिनिज्म आसी तेणु फेमिनिस्ट मानकर रिसर्च है फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड फेमिनिज्म रु फेमिनिज्म रु फेमिनिस्ट रिसर्च मेथडोलॉजी जे फेमिनिस्ट माने कहउचंती रिसर्च करिवा पई हेले प्रथमे वोमेन माने केमिति सोसाइटी की देखुचंती तांकर पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करिवा दरकार तेन सेटा गोटे फोर्थ रिसर्च है फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड फिफ्थ है पोस्ट मॉडर्न रिसर्च मेथड पोस्ट मॉडर्न रिसर्च मेथड एगुड़ा भी सब क्वालिटेटिव रिसर्च रे तापरे आजिका दिन रे सोशियोलॉजी रे आउरी बहुत गुड़े क्वालिटेटिव रिसर्च अच्छी फॉर एग्जांपल एथनो मेथोडोलॉजी एथनो पढ़े आगु मेथोडोलॉजी फेनोमिनोलॉजी सिंबलिक इंटरैक्शनिज्म ड्रामाटर्जी तेणु यही सब गुड़ा भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस उपरे बेस है तेणु ये गुड़ा भी सब पड़ेब क्वालिटेटिव रिसर्च रे ए हिसाब रे मु जहाँ पढ़ेली कहली PSSRM पॉजिटिविस्ट सोशल साइंस रिसर्च मेथोडोलॉजी की कहुच्छी क्वालिटेटिव रिसर्च आउ बाकी जेतिक जिनस रहिले इंटरप्रिटेटिव सोशल साइंस रिसर्च मेथोडोलॉजी क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च मेथोडोलॉजी फेमिनिस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी पोस्ट मॉडर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी फेनोमिनोलॉजी एथनो मेथोडोलॉजी सिंबलिक इंटरैक्शनिज्म ड्रामाटर्जी ये सबू मानक मिसई दबा सेगुड़ा सबू पलि आसिबो क्वालिटेटिव रिसर्च रे टिके बुझाई दउची फेनोमिनोलॉजी कौन फेनोमिनन रु हिची फेनोमिनोलॉजी जे प्रत्येक व्यक्तिर सोसाइटी की नहीं की फीलिंग अलगा तेनो सोसाइटी की प्रत्येक व्यक्तिर पॉइंट ऑफ व्यू रो बुझिबो दैट इज फेनोमिनोलॉजी एथनो मेथोडोलॉजी कहले कोन मु आ गोटे क्लास रे तुम कहितली एथनो प्लस मेथड प्लस लॉजी जे सोसाइटी रे लोक माने विभिन्न घटना उपरे डिस्कशन करिकी गोटे मीनिंग दियंती दिने मु एग्जांपल देई नथली जे गोटे जगह स्वाधीनता संग्राम होता स्वाधीनता संग्राम रे कौन है ना गोटे से एरिया रो हाईकास्ट लोक जे जमींदार थिला सी पार्टिसिपेट कला स्वाधीनता संग्राम रे सी मरीगला पार्टिसिपेट कला परे ताको पुलिस लाठी माड़ है मरीगला परे से लोक को से एरिया रे लोक डिक्लेयर कले शहीद कारण देश मातृकार स्वाधीनता पाई से निज जीवन को जलांजलि देदेला किंतु सेई गाँव रे आउ गोटे लोकटे दलित कैटेगरी थिला शेड्यूल कास्ट कैटेगरी थिला से सरकारी चाकरी करथला से पुलिस कनेस्टेबल टे हेइथला से गांधींकर प्रभाव रे चाकरी छाड़ीदेला पुलिस स्टेशन को गलानी पुलिस रेजिग्नेशन घर बसिकी कहीदेला पुलिस इनक्वारी रे आसिला जतले आसिला ते पुलिस पोशाक रे निया लगेई देइछि निया लगेई देला परे पुलिस ता घर को आसिला से भारत माता की जय कहिला पुलिस कहिला भारत माता की जय कहनी ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद कहनी से कहला नहीं ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद भारत माता की जय पुलिस ताको गुली करके मारदेला से शेड्यूल कास्ट लोकटे थिला से पाठ पढ़ी नथिला से बाहासा ही नथिला मरीगला परे ताकू आउ शहीद घोषणा करा हलानी से मरीगला परे गाँ लोक कहिले सी होची बाबनाभूत हो गला तेणु स्वाधीनता संग्राम रे भाग नहीं कि गोटाए लोक हाई कास्ट लोक इन्फ्लुएंशियल लोक शहीद लो कास्ट लोक सी भी स्वाधीनता संग्राम रे भाग नेला चाकरी छाड़ीदेला पुलिस गुड़ी रे मरला लोक माने कहले सी बाबनाभूत हो गला पोखरी हुड़ा रे थाए आ बाउंस बण रे कटकट शब्द रात्रि करुए से बाटे गले सी हूँ डराए लोक को तेणु स्वाधीनता संग्राम रे योगदान करी देश पाई प्राण बलि देइथिबा जणे लोक होची शहीद आउ जणे लोक होची बिचरा बाबनाभूत तेणु शहीद आ बाबनाभूत भितर डिफरेन्सटा किए तैयारी करछि सोशियोलॉजिस्ट करछंती नाई सेही एरियार लोक करछंती लोक कौन भाबुचंती लोक कलेक्टिविटी रो मेथड को स्टडी कर दैट इज कॉल्ड एथनो मेथोडोलॉजी एथनो मीन्स कलेक्टिविटी और फोक मेथड एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द मेथड यूज्ड बाय द पीपल
फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियलिटी जड़े होगला रियलिटी रे स्वाधीनता संग्रामी आउ शहीद आउ जड़े होगला रियली भावनाभूत देश स्वाधीनतार भाग देकी तेणु यहाँ हूँ एथनो मेथोडोलॉजी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म कौन सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म कहे आमे सब विभिन्न सिंबल यूज करती परस्पर संगे कम्युनिकेट करिया पई प्रश्न मु तुमको पचारची तमे मो प्रश्नर उत्तर बुझी कहि परिबो तमे मुंड टुंगारी की कहलो हां सो नॉडिंग द हेड इज ए सिंबल वेविंग द हैंड मु बर्तन हाथ हलौची दैट इज ए सिंबल ए हाथ हला माध्यम रे मु तुमको किछि गोटे कहिया पई चाहूची मुंड टुंगारी की तमे मते किछि कहिया पई चाहूछ सो वी आर यूजिंग सिंबल्स फॉर द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग विथ ईच अदर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर तेणु सिंबल उपरे प्रायोरिटी जो मान दियंती सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट एवं से अप्रोचटा होची सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म ड्रामाटर्जी ड्रामाटर्जी कहले लाइफ इटसेल्फ इज ए ड्रामा आमे विभिन्न ड्रामा जीवन सारा कर चलचंती केमिति देख सेन कहूथिली जे स्टेज को पड़ोची हीरोटाए स्टेज ऊपर को जाऊँगी भिलेनटे से माने स्टेज रे जहाँ बिहेव करछन दैट इज ऑन स्टेज बिहेवियर स्टेज तले से माने जेमती बिहेव करछन कहीं न देखला बेले जेमती बिहेव करछन दैट इज ऑफ स्टेज और बैक स्टेज बिहेवियर जे भिलेन यात्रा रे हेची से कोन करछि मद पिउछि स्टेज रे प्रकृत रे से वास्तव जीवन में सी मद फद किछि पियनी तेन ताको तो रोल दिया मद पीबार रोल तेणु सी कौन कर पानी रे रंग पुरे बोतल काच बोतल पिऊँ लोक कहते से भिलेनटा मदुआटा है कि प्रकृत में हि इज ए टीटोटलार केबे जीवन में मद पीनी ऑन द अदर हैंड हीरोटा से आइडियलिस्ट रोल प्ले करुच्ची वास्तव जीवन में बिना मद पिहारे से स्टेज रे जाके भलरे परफॉर्म करि बुझी तेणु आमे लाइफ रे ड्रामा केवल कर चलचंती अन्यर इंप्रेशन को मैनेज करिया पाई तेणु ड्रामाटर्जी रे बैक स्टेज आ ऑन स्टेज बिहेवियर मनुष्यर केमिति तफात मु तुमको क्लासरूम रे जेमती कथबार्ता करछि मो निज घरे सेमती कथबार्ता करेनी से जो डिफरेंसटा सेटा को जे स्टडी करूछि से अप्रोचटा को कह ड्रामाटर्जिकल अप्रोच तेणु एगुड़ा सबू फेनोमेनोलॉजी एथनो मेथोडोलॉजी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म ड्रामाटर्जी इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी क्रिटिकल सोशियोलॉजी और क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सबू को आमे मिसई दबा दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी आउ दरखेम करा अप्रोच होची क्वांटिटेटिव रिसर्च दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च तेणु आमे कहिबा क्वांटिटेटिव रिसर्च सबले चिंता करे जे रियलिटीटा एक्सटर्नली एक्जिस्ट करूची क्वालिटेटिव रिसर्च कहे रियलिटी बोली कि किसी जिनस नहीं मनीष निजे रियलिटी की तैयारी करे सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी कथा कहे तेणु सी कहे रिसर्चटा प्री डिफाइंड पाथ रे स्टेप बाय स्टेप मूव करिवो बा प्रोसीड करिवो क्वालिटेटिव रिसर्च कहिवो रिसर्चटा गोटे नॉन लिनियर पाथ रे जाउची लाइन सेम लाइन रे जाउनी नॉन लिनियर पाथ रे जाउची से रिसर्चर रो कन्वीनियंस अनुजाई जे कोनसी पाथ को नहीं पारिबो एवं ए दीटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च एमाने कहंती डाटा कलेक्शन रो टेक्निक आक लगी अलगा अलगा सेम टेक्निक में क्वांटिटेटिव रिसर्च रे डाटा कलेक्शन पाई सर्वे मेथड को यूज करा हुए सर्वे मेथड को यूज करा हुए किंतु क्वालिटेटिव रिसर्च रे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करा हुए इंटरव्यू मेथड को यूज करा हुए यही हिसाब रे आमे देखंती देयर इज ए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड देखि दिए आ भितर किछि प्रश्न तुम पचारछ कि भाग्यलक्ष्मी पचारछ स्पेंसर आउ कॉम्ट कॉम्ट करबा कहली पॉजिटिविज्म से तैयारी कले तांको अप्रोचटा पॉजिटिविज्म स्पेंसर कर अप्रोच स्पेंसर आसले बायोलॉजी रो एवं स्पेंसर प्रथमे स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट यूज करथिले हर्बर्ट स्पेंसर साइंटिफिक अप्रोच कथा कहूथिले तेनो तांकर होची कोन इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म सेटा भी पॉजिटिविज्म रो कथा कहबो साइंटिफिक अप्रोच रो कथा कहबो हला
तेणु मु भावुची जेतिक जिनस डिस्कशन कली विथ दिस मच डिस्कशन यू वुड बी एबल टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। देख क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव भितर कौन तफात अच्छी ये लिखिदे। क्वांटिटेटिव टा ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड अडॉप्ट करे, क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेटिव। सेकेंड डिफरेंस पर्पस, क्वांटिटेटिव रिसर्च रे डाटा हला न्यूमेरिकल डाटा, क्वालिटेटिव रिसर्च रे टेक्सटुअल विजुअल नैरेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव रिसर्च रो पर्पस हला टू क्वांटिफाई वेरिएबल टेस्ट थ्योरीज। तेनो क्वांटिटेटिव रिसर्च रे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हुए। एठी कोन एक्सप्लोर मीनिंग एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स। मेथोडोलॉजी, क्वांटिटेटिव रे सर्वे एक्सपेरिमेंट स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव रे इंटरव्यू फोकस ग्रुप एथनोग्राफी। क्वांटिटेटिव रिसर्च रो अप्रोच है डिडक्टिव, आर है इंडक्टिव। डिडक्टिव माने साइंटिफिक लॉ को नहीं कि पर्टिकुलर केस रे पहुंचीबा। जने लोक सुइसाइड कर देछि, सुइसाइड ऊपर थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी अछि। जो लोकर अटैचमेंट कमी जाए ग्रुप संगे सी सुइसाइड करे। तेणु क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन करिवो, गोटे लोक सुइसाइड करछि से आगे दरखेम्स थ्योरी ऑफ सुइसाइड की कंसीडर करिवो, तापर पर्टिकुलर लोक पाखरे पहुंचीबो ये लोकटा काहे की सुइसाइड कला। दरखेम कहछन तार अटैचमेंट कमी जार कमीबो से सुइसाइड करिवो, सेटा हला डिडक्टिव। डिडक्टिव मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल थ्योरी एंड रीचिंग एट पर्टिकुलर केस। तार ऑपोजिट टा होची क्वालिटेटिव रिसर्च रे, दैट इज इंडक्टिव। इंडक्टिव मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम पर्टिकुलर केस। लोकटाई सुइसाइड करछि, लोकर पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करिवो, ता फैमिली लोकन को पचारिवो, पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडी करिवो। फैमिली लोक जानचंती से कोन सुइसाइड करिवार 2 दिन 4 दिन पूर्व कोन कहउथला, ता मन भितरे कोन फीलिंग थिला, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पाखरु पहुंची कि थ्योरी फॉर्मुलेशन आडू को जीवो। सैंपल साइज टा जेटा होची क्वांटिटेटिव रिसर्च रे लार्ज एंड रिप्रेजेंटेटिव, किंतु सैंपल साइज टा क्वालिटेटिव रिसर्च रे स्मॉल एंड पर्पसिव। एनालिसिस एठी स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल, एठी आसीबो थीमेटिक नैरेटिव। आउटकम जनरलाइजेबल फाइंडिंग, एठी आसीबो डीप कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। पिला माने एटा बहुत लेंदी टॉपिक टे, तेनो मु आज केवल पढ़ेली तुमको फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। राइट नाउ आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट ऑन बिहाफ ऑफ StudyIQ। पिला माने बर्तन StudyIQ रे गुरु कृपा ऑफर चलची। तमे जदि StudyIQ रे एनरोल करिया पे चाहुच, आज ही लास्ट डे ऑफ एनरोलमेंट विथ सब्सटेंशियल डिस्काउंट। StudyIQ रे मु पढ़ौची सोशियोलॉजी ऑप्शनल, एथिक्स दैट इज GS पेपर 4, GS पेपर 1 रे सोशल इश्यूज पढ़ौची, ता संगे इंग्लिश एसे भी पढ़ौची। तमे जानिच IAS परीक्षा हो बा OS परीक्षा हो, रिटिन रो वेटेज होची 1750 मार्क, सेथरु 1100 मार्क रो पाठ मु पढ़ौची इंक्लूडिंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल। एवं 1-to-1 इंटरव्यू बोथ IAS और OS परीक्षा पाई मु कंडक्ट करूची। मोर टेलीग्राम ग्रुप होची थिंक सिविल सर्विसेज थिंक सरोज सर। जदि StudyIQ रे एनरोलमेंट करिया पे चाहुच एवं कोनोसी क्वेरीज तमर अछि, एई नंबर रे तमे कांटेक्ट करि परिबो StudyIQ। पिला माने एटा आज ये हिसाब रे मैं तुमको बुझेली जे फंडामेंटल डिफरेंस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च रे कौन। So right now let me wind up the class for today. Rest of the things related to quantitative and qualitative research I will discuss in the next class. So thank you all for watching this class. Wish you all the best.